हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन मैथ विद अकेडमी। तो हम लोग जो है डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3 जो कि डिफरेंशिबिलिटी के ऊपर बेस्ड है स्टार्ट करा था। हमने 5 प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लिया था। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वी आर डूइंग द एक्सरसाइज 3 from your textbook, recommended textbook for the Lucknow University syllabus। तो एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 6 में इन्होंने क्या बोला है, व्हाट वी हैव टू चेक। तो शो दैट दे आस्किंग अबाउट, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल not differentiable at x is equals to 0. So we have to check differentiability at x is equals to 0. Okay. So the function is defined like this. Fx is just equal to x e to power 1 by x minus, this is e to power minus 1 upon x divided by, this is e to power 1 by x, and this is plus e to power minus 1 by x. Okay. And at the point, the value of the function at 0 is just equal to 0. Okay, when x is equal to, so we have to check differentiability at x is equal to 0, and it is not differentiable at x equals to 0, we have to say. So let's start. So left hand derivative, the left hand derivative, या फिर आप इसको शॉर्ट में LHD भी लिख सकते हैं, and that is denoted as uh, left hand derivative at the point A is defined as, this is limit h tending to 0. This is your f of uh, a minus h minus f a divided by minus of h. तो at the point A, it's, तो हमको क्या निकालना है, this left hand derivative at the point 0 is defined as, this is limit h tending to 0. This is your f of 0 minus h and minus of f0 divided by minus of h. Okay. So we have, when x is not equal to 0, the function is defined like this. So we will put function here, and in the place of x we put minus of h in this function. So it will be limit h tending to 0, minus of h in the place of x. So you will have minus of h and e to power minus 1 upon h, and minus e to power minus minus plus हो जाएगा, तो plus 1 upon h divided by, this is your e to power minus 1 upon h, and this is plus e to power 1 by h. Okay. And f0 की वैल्यू 0 है, तो इट इज -0, and this is divided by, so this is divided by, this is minus of h. Okay. So this minus of h and this minus of h will cancelled out. this is cancelled out, तो क्या रिमेनिंग बचेगा हमारे पास, दिस इज योर लिमिट h tending to 0, and this is your e to power minus 1 upon h and minus e to power 1 upon h divided by, this is e to power minus 1 upon h, and this is plus e to power 1 by h. ये लिमिट, अब इस लिमिट को हमें कैलकुलेट करना है फाइनाइटली। कोशिश ये होती है कि जब लिमिट हम कैलकुलेट करें तो एक फाइनाइट वैल्यू हमारे पास निकल के आए। ठीक है, तो हमें उसको सिंप्लीफाई करके फिर हमें करना होता है। तो
एक चीज हम देख लेते हैं हियर, दिस इज एच इज पॉजिटिव, वी नो दैट। तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, इट मीन्स एच इज टेंडिंग फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ जीरो, इट मीन्स वन अपॉन एच विल बी टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी। द लिमिट ऑफ वन अपॉन एच इज प्लस इंफिनिटी व्हेन एच इज टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड। या फिर if we just have this is h tending to zero, then it will be minus of 1 upon h अगर हम लिख दे रहे हैं तो it will be minus of infinity। ओके, सो here कुछ ऐसे ही लिमिट है यहाँ पर। तो हम कुछ करेंगे क्या, लेट अस सी व्हाट वी कैन डू। तो हमने क्या करा, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, आई एम जस्ट टेकिंग कॉमन e टू पावर 1 बाई h। तो व्हाट इज रिमेनिंग हियर, e टू पावर माइनस 2 अपॉन h, ओके, एंड माइनस ऑफ 1 is divided by e to power 1 upon h, and this is of e to power minus 2 upon h plus of 1, okay, this we have। so this thing will be cancelled out, एक दूसरे को हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो यू हैव दिस रिमेनिंग, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, दिस इज e टू पावर माइनस 2 अपॉन h एंड माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई e टू पावर माइनस 2 अपॉन h प्लस। ओके, ये आ गया। अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान कर लेते हैं कि वेन एवर दिस लिमिट व्हेन x इज टेंडिंग टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी, x is tending to minus of infinity, e to power x will be tending to zero। We know that when x is tending to minus infinity, then e to power x will be tending to zero। तो यहाँ पर जब हम h tending to zero करेंगे तो 1 upon h will be tending to minus infinity, minus 1 upon h will be tending to minus infinity, so e to power it will becomes zero। So you can just अगर एक स्टेप में हम लिखना चाहे तो e power minus infinity you can just write here divided by e to power minus infinity plus of 1, so it will be 0 minus 1 upon 0 plus 1, and from here you get minus of 1। so जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इस फंक्शन का वो माइनस का 1 निकल के आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेट अस चेक कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आता है। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव या इसको स्टार्ट में आर एच डी, वी कैन राइट आर एच डी, and this is your right hand derivative at the point a is defined as limit h tending to 0, uh, f of a plus h minus of f a divided by plus h, okay। so we have to find at 0, so this is f r f dash of 0, this is the notation for right hand derivative, and this is the limit when h is tending to 0, this will be f of 0 plus h minus of f0 divided by h, okay। now we use this function, वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा h e टू पावर माइनस 1 अपॉन h, e टू पावर a प्लस था ना, प्लस था, प्लस एंड माइनस e टू पावर माइनस 1 अपॉन h डिवाइडेड बाई this is your e to power 1 by h plus e to power minus 1 upon, यही हमारे पास फंक्शन था। बिकॉज यार h इज पॉजिटिव, 0 प्लस h मतलब h सबको पॉजिटिव में रखना है, तो इट विल बी बिकम्स लाइक दिस माइनस 0 एंड डिवाइडेड बाई h। so this h is h cancelled out, so what is remaining here, this is the limit h tending to 0, and if I'm taking here similarly we will do here also। तो अगर हम यहाँ पर e to power 1 by h हम कॉमन ले लेते हैं तो we have this is 1 minus e to power minus 2 upon h, okay, and similarly this is e to power 1 by h, and this will be 1 plus e to power minus 2 upon h, okay। so we have this is cancelled out, okay। so if this is limit h tending to 0,
यहाँ पर हम लिमिट जब लगाएंगे तो ये हमें पास बचेगा ई पावर माइनस टू अपॉन एच, एंड दिस इज वन प्लस ई पावर माइनस टू अपॉन। यहाँ पर जब लिमिट लगाएंगे तो यू विल गेट दिस इज वन माइनस जीरो अपॉन वन प्लस जीरो, एंड यू कैन से दिस इज योर वन। So right hand derivative is we will get right hand derivative is 1 and left hand derivative is minus. So you can say since left hand derivative is not equals to right hand derivative at x is equals to 0. This implies given function is not differentiable at x is equals to 0। ओके, यही हमको प्रूव करना था। तो क्लियरली हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करा, हमने राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करा, और देखा दोनों की वैल्यू निकल तो रही है। दिस वी विल एबल टू फाइंड द फाइनाइट वैल्यू ऑफ अ लिमिट, बट दैट लिमिट इज नॉट इक्वल टू योर left hand derivative of the right hand derivative, है ना? Both are not equal, but they have finite value. Okay, so it means function is not differentiable. For differentiability of function, the left hand derivative and right hand derivative should be exist, and both will be equal, and that will be the value of the derivative at that point of the function. Okay, so I hope कि ये प्रॉब्लम समझ में आएगी होगी, और ये आपको पूछी भी गई थी। दिस इज an important problem that is asked in the Lucknow University examination of the B.Sc. This problem they asked in 2000. So this problem is just LU 2009 में पूछा था, और भी ईयर्स में पूछा गया होगा ऐसी प्रॉब्लम। तो यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमें इन प्रॉब्लम्स को करना होगा। ओके ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्कस द डिफरेंशिबिलिटी of the function and that is function is your fx is just equal to mod of x minus 1 and plus mod of x minus 2 in the interval that is your 0 comma 3. Okay, so discuss the differentiability of the function. This is fx equals to mod of x minus 1 and plus mod of x minus 2 in the interval x minus 3, in the interval 0 comma 3. So let us see. तो यहाँ पर इसको जो प्रॉब्लम होगी, इंड पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी नहीं होती है, किसी भी इंटरवल के इंड पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो 0 और 3 पे तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। वी आर द मिडिल टर्म वेयर दिस कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ पर हमारे पास और पेज आता है, दैट इज योर एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस। तो वी कैन ब्रेक दिस मॉडुलस फंक्शन इन द पीस वाइज फंक्शन, है ना? पीस में बदल देते, यू नो दैट की मॉड ऑफ एक्स कैसे ओपन होता है? इट विल बी ओपन एक्स इज पॉजिटिव व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, एंड इट विल बी माइनस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो जब निगेटिव होते हैं तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, एंड इफ इट इज पॉजिटिव और 0, ठीक है, तो उस केस में वो सेम ही बना रहता है। तो हमारे पास इसको भी जब हम ओपन करेंगे इस फंक्शन को, तो वी विल ब्रेक दिस 0 टू इंटरवल इन 3 फॉर्म। दिस इज एफ, we can break in this form. The interval is when x is
greater or equal to 0, I'm just taking this interval, and I'm just taking less than 1, 0 से बड़ा बट 1 से छोटा। तो इस केस में ये जो वैल्यू होगी x की, या यू कैन से if x is less than 1, then you can say x minus 1 is less than 0. It means this will be remains negative, and this will be remains negative. Okay, so we have just a second. Okay, so if I'm just taking x between 0 and 1, that this x minus 1 will be less than 0, and x minus 2 is also will be less than 0. So both will be open with their negative sign. It will be minus of x minus 1, and it will be minus of x minus 2. Okay, and when we just taking x is greater or equal to 1 and less than 2. Okay, because 2 is also a critical point. तो यहाँ पर हम जब 1 से बड़ा ले रहे हैं तो दिस विल बी पॉजिटिव। ओके, x माइनस 1 विल बी पॉजिटिव, बट x माइनस 2 इज अगेन नेगेटिव, so it will be open x minus 1 will be the positive sign, and x minus 2 will be with the negative sign. Okay, when you take this x is greater or equal to 2 and less or equal to 3, then it will be this will be positive, x minus 1 will be positive, and x minus 2 will be also positive. Okay, so clearly we can have this function effect like this. This is minus of x, minus of x, minus of x, it will be minus of 2x, and this is minus minus plus of 1, and this is minus minus plus of 2, तो ये हो जाएगा 3। Okay, this is x is less than 1 and greater or equal to 0, and this is x minus of x is cancelled, मतलब तो x में से x क्या 0 और माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 2। ओके, तो मतलब 2 में से 1 चला जाएगा तो इट विल बी रिमेन्स 1 होगा। Okay, when this x is less than 2 and greater or equal to 1, then it will be 1. Value of the function is 1. X and x is 2, so it will be 2x, and this is minus of 3. Okay, so when x is less or equal to 3 and this is greater equal to 2, तो हमारे पास फंक्शन अब ऐसे ब्रेक हो गया। We have to check differentiability at the point 1 and 2, x equals to 1 and 2, and other point function is differentiable, because if I'm just taking between the 0 and 1, this is a polynomial function, and polynomial function will be the differentiable. When it will be between 1 and 2, it will be have only constant function, that is also differentiable. When it will be between 2 and 3, it is a polynomial function, it again will be a differentiable function. But in the critical point, at the end points, actually 0 and 3, so we have, there's no need to check at the end points 0 and 3, it's not differentiable. So we have to check at the point 1 एंड एक्स इक्वल टू 2, ये दो पॉइंट पे हमें चेक करना पड़ेगा डिफरेंशिएबिलिटी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल टू 1, सॉरी पहले हम 1 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जैसे अभी हमने बताया, वी यूजिंग दिस फार्मूला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द 1। फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर हम फंक्शन की वैल्यू 1 पे बात करते हैं तो x इज ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास 1 आ रही है फंक्शन की वैल्यू, और अगर हम फंक्शन की वैल्यू 2 पे बात करते हैं तो वहां पर हम फंक्शन की वैल्यू फन इज ग्रेटर इक्वल टू 2, तो फंक्शन हमारा ये वाला यूज हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम 2 रख देते हैं, तो दिस इज 2 इंटू 2 माइनस 3, इट मीन 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे भी 1 आ रही है और 1 पे भी 1 ही आ रही है। 2 टू जा 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 इज 1। ओके, और यहाँ तो 1 है ही। तो लेट अस, हम 1 पे चेक करने जा रहे हैं, तो वी जस्ट यूज दिस फार्मूला, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 1 माइनस h माइनस का f1 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ h। हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो वी विल यूज माइनस ऑफ h हियर। so what, this is limit h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ 1 माइनस h, 1 माइनस h मतलब h से 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए फंक्शन हमारे पास ये वाला है। ओके, तो वी विल यूज दिस
So this is minus of 2. In the place of x, we will use 1 minus h. So this is 1 minus h and plus of 3. Plus of 3 and minus of 1. So f1. f1 की फंक्शन की वैल्यू क्या है 1. तो divided by minus of h. Okay. So from here you got क्या हमारे पास निकल गया दिस इज लिमिट h tending to 0 and this is minus of 2 minus minus plus of 2 of h and plus of 3 minus of 1 divided by minus of h. So from here you will get this is your limit h टेंडिंग टू 0 और ये हमारे पास 3 और -1 -2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2h अपॉन माइनस ऑफ 2. तो h से h कैंसिल यू विल गेट माइनस ऑफ 2. तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो -2 हमारे पास मिल रहा है. लेट अस सी अबाउट द राइट हैंड डेरिवेटिव. फिर राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव दिस इज r f डैश ऑफ 1 is just equal to limit h tending to 0 f uh, f of 1 plus h minus of f1 divided by h. अब f1 plus h का मतलब फंक्शन ये वाला यूज करेंगे और ये कांस्टेंट फंक्शन है इसकी वैल्यू है 1. तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 दिस इज 1 और फंक्शन की वैल्यू 1 पे 1 डिवाइडेड बाई h. तो यू विल गेट 0 है. तो जो राइट हैंड डेरिवेटिव है दैट इज योर 0 और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो -2 है. तो यू कैन जस्ट से सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव दिस implies function is not differentiable at x is equals to 1. x equals to 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं. ओके नेक्स्ट हम चेक करते हैं एट x is equals to 2. x बराबर 2 पॉइंट पे हम चेक करते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं. तो x बराबर 2 पे फिर से वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जस्ट यूज द फार्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिस इज l f डैश ऑफ 2 दिस विल बी लिमिट h tending to 0 and this is f of 2 minus h minus का f2 divided by minus of h. So we can see कि यहाँ पर जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो फंक्शन जो हमारे पास डिफाइंड है लेट अस सी कि व्हेन x इज लेस देन 2 तो फंक्शन हमारे पास जो है वो 1 आ रहा है फंक्शन की वैल्यू. तो यू कैन जस्ट सी कि दिस विल बी 1 माइनस का फंक्शन की वैल्यू 2.2 पे भी 1 है एंड डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ h. तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है एट 2 इज 0. ओके व्हाट विल बी द राइट हैंड डेरिवेटिव लेट अस सी. तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं. राइट हैंड डेरिवेटिव इट मींस दिस इज r f डैश ऑफ 2 is just equal to limit h tending to 0 and this is f of 2 plus h minus of f2 divided by h. Okay so it will be limit h tending to 0 and 2 plus h. अब हमारे पास जो फंक्शन हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे लास्ट वाला when x is greater equal to 2 then t 2x minus 3. So it will be use this function this is 2x minus 3. So this will be 2 times 2 plus h minus का 3 and minus का 1. ओके क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या है 1 है और डिवाइडेड बाई h. So it will be limit h tending to 0 and this will be 2 to the 4 and this is plus of 2 of h minus of 4 divided by h. So from here you will have 4 minus 4 is 0 और h से h cancel हो जाएगा तो you will have this is your limit h tending to 0 and it is of the value 2. हाँ 2 हमारे पास है इट मीन 2. तो फंक्शन की वैल्यू जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो 2 है और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो 0 है. तो यू कैन आल्सो सी क्लियरली सिंस द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू
right hand derivative at x is equals to 2, x बराबर 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, इट इम्प्लाइज एफ एक्स the given function is not differentiable at x is equals to, so this function is not differentiable obviously at the end point and at the x is equals to 1 and x equals to 2, and otherwise it is differentiable or other points it will be differentiable, but it will be not differentiable at 1 and 2. So in the domain in the interval 0 and 3, we have 2 points 1 and 2. The function is not differentiable. Okay, so x equals to 1 and 2 is the 2 points. Okay, so I hope you are able to understand this problem and कैसे solution लिखना है you can सीख ले, है ना? तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए. प्रॉब्लम नंबर 7. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है अबाउट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एंड डिफरेंशियबिलिटी बोथ. क्वेश्चन नंबर 8. तो इसको भी डिस्कस कर देते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एग्जीमिंग फॉर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी of fx is equals to function defined this is x into cos 1 upon x, and this is x is not equals to 0. Okay, x is not equals to 0, and it will be value is 0 when x is equals to कुछ बराबर 0 पे 0% की वैल्यू है. तो वी हैव टू चेक एट x इज इक्वल्स टू 0. x बराबर 0 पे आपको कॉन्टिन्यूटी देखती है और डिफरेंशियबिलिटी देखती है. ओके, तो लेट अस चेक डिफरेंस. फर्स्ट कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं. तो फॉर continuity we have to show, we have to check this is limit at the point x tending to 0 of the function fx should be equal to the value of the function at this point. इसके बारे में देखना है ना कि तो फंक्शन की वैल्यू तो गिवन है कि हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है एट द 0 इज 0. तो अब हमें देखना है कि लिमिट क्या 0 निकलती है. सो हेयर द बोथ द पॉसिबिलिटी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, या आप डायरेक्टली भी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो इफ इट एग्जिस्ट. So if you are going for calculate the limit x tending to 0 of this function x cos 1 upon, so we have seen कि जो cos की वैल्यू होती है that is the finite value between -1 and 1. It will be maximum value is 1 and minimum is -1. So it means that when you tending to x is tending to 0, whatever this 1 by x, it will be tending to infinity clearly. Whatever this 1 upon x, this cos this cos 1 upon x will be some finite value, but it's undefined. We don't know. You can say does not exist. ये exist क्या करेगी? We don't know what is the finite value, but it still will be a finite value. वो finite value होगी. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं when x is tending to 0, this x is tending to 0, it means 0 into we have some finite. So when you multiply this 0 with a finite value, you will get a 0. So clearly we can say the limit of this function at 0 is 0. So you can say this implies this limit when x is tending to 0, this is fx is just equal to 0, and which is equal to the value of the function at the point x is equal to 0. So this implies
given function is continuous, given function is continuous at x is equal to, ये फंक्शन x बराबर 0 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस, इट इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की बात हो गई, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है इक्वल टू 0। लेट अस चेक द डिफरेंशियबिलिटी, इज द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट द एक्स इक्वल टू 0। तो फॉर दैट, फॉर डिफरेंशियबिलिटी, फॉर डिफरेंशियबिलिटी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मीन्स दिस इज लिमिट h is tending to 0 and this is your f of this is 0, क्योंकि x हमारा पॉइंट जो है वो तुम्हारे पास 0 है, a minus h and this is minus of f0 and divided by minus of h. So let us put in the place of x minus of x, so it will be have limit h tending to 0 और यहाँ पर हम माइनस का h पुट करेंगे and this is cos of minus 1 upon h, okay, and this will be 0 पे 0 ही है and divided by minus of h. So from here you will cancel this minus of minus h. अब यहाँ पर हमारे पास डिफिकल्टी है to be calculate the this limit. This is limit h tending to 0 and we have this is cos and cos of minus theta is plus theta. You can this 1 upon h you can say. So you know that कि हम when h is tending to 0 then 1 upon h will be tending to infinity and at infinity this cos x will have some finite value, but वो finite value क्या होगी you don't know, you don't know this finite value, so this limit does not exist, this limit does not exist, this limit does not exist, t and तो ये लिमिट हमारे एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि हमको ये नहीं पता कि इन्फिनिटी पे कॉस्ट वैल्यू क्या देगा, एग्जैक्टली व्हाट विल बी द फाइनाइट वैल्यू तो होगी, ये कंफर्म है बिकॉज वैल्यू इज बिटवीन -1 and 1, तो इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकती वैल्यू, है ना। बट व्हाट इज द वैल्यू एक्चुअली वी डोंट नो एट इन्फिनिटी, व्हेन x is tending to 0 then 1 upon h will be tending to plus infinity here, so it will be does not exist, it means left hand derivative is does not exist. Similarly, you can go for the right hand derivative, that will be also does not exist, but there's no need of to check the right hand derivative because if left hand derivative not exist, is enough to say the function is not differentiable, है ना। So this implies, given function f(x) which is equal to x and cos 1 upon x is not differentiable at x is equal to 0, x बराबर 0 फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, ठीक है। इट इज कॉन्टिन्यूअस, ऑब्वियस इट इज कॉन्टिन्यूअस बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। सो अगर हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे थे और हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं होता तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, बिकॉज वी नो वन थिंग, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन ऑब्वियसली इट विल बी अ कॉन्टिन्यूअस। दिस differentiability implies continuity. A function is differentiable, it will be obvious will be the continuous. Continuous. And this implies not continuous. The function continuous नहीं है. This implies not differentiable. फिर वो differentiable नहीं होता. If a function is continuous, then we can't say कि वो differentiable है या फिर नहीं. Okay. तो अगर हम continuity चेक कर रहे हो फंक्शन continuous ही नहीं है तो हम वहीं स्टॉप हो जाएंगे, हम कह देंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा।
ओके, तो आई होप कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा है और आप समझ रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो है 9, 10 एंड 11, okay, we will discuss in the next lecture because this lecture will be lengthy. Okay, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं, जो रिमेनिंग 3 प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। ओके, तो इनफ फॉर दिस लेक्चर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो सभी जो स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप शेयर करिए और भी स्टूडेंट तक, जो भी इन लेक्चर्स को बेनिफिट उठा सकें। तो थैंक यू सो मच। और अगर कुछ आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर कमेंट करिए एज अ फीडबैक, एज अ अप्रिसिएशन। और अगर आपको कुछ डाउट है, आपको कोई चीज समझ नहीं आई, तो यू कैन आल्सो मेंशन इन अ कमेंट। इफ आई विल सी, आई विल रिस्पॉन्ड। ओके, thank you so much. Keep learning and keep watching the videos and learn the mathematics.